Psychologist, would you diagnose Pakistan as having an identity crisis? I would diagnose Pakistan as having low self-esteem. के बारे में And then we compensate for that. सर कोई पाकिस्तान को फिर ट्रॉमा भी होगा, कोई कॉम्प्लेक्स PTSD भी होगा. I mean, But trauma ज़रूर है. Trauma of partition, trauma of colonialism, economic trauma, trauma of extraction. I think जो हमारी colonial history है, our trauma didn't end there. Our trauma continued. Pakistanis are trapped in some sort of an imagined identity. कभी वो सोचते हैं कि जी हम अर्तुगरुल गाजी हैं, कभी वो सोचते हैं जी कि वो तारिक बिन ज़ियाद हैं. They don't think that they're Pakistanis. They always think they're somebody else. Is that true? Let's look at colonialism. The English were the last colonizers. उससे पहले we had Arab invaders, Persian invaders, Central Asian invaders. The idea of nasl, mazhab और tabqa, how is that different between Pakistan and the West? वहाँ race is the big issue. पाकिस्तान में मज़हब is the big issue. Sir, is it mazhab or caste? Caste is big in Punjab. Once you leave Punjab as someone who's come from Karachi, ये कम हो जाता है. Has being religious or being a religious state, has that इसने कोई बुरा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की नफ्सियात पे? जो इस्लाम को पॉलिटिक्स में लिया गया है, इस्लाम एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिक्स, एक्सक्लूजन, उसने लोगों की नफ्सियात पे उसका काफ़ी असर हुआ है. ये हमारे मज़हब का एक बहुत छोटा हिस्सा है, मगर तवज्जो सारी इस पे है कि मैं काफिर तो नहीं बन जाऊंगा, मैं गुनाहगार तो नहीं होगा. अगर आप इसी में उलझे रहेंगे तो ज़ाहिर है परेशानी तो होगी. और अगर I'll ask you the $64,000 question, इसका हल क्या है? That's a good question. Like you just had a breakup. Of course you're sad. Part of life. So what's more common in Pakistan in your experience? Depression और यार इस बारे में बात मत करो? इस बारे में बात मत करो. जो मूवीज में एक ब्रेक थ्रू होता है ना, एक आहा मोमेंट और सब कुछ सही हो जाता है, वो कभी नहीं होता. अमीर लड़की को थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर CBT दिया जाता है, और गरीब लड़की को कहा जाता है बेटा सब्र करो. It's okay to hurt, to struggle, to be depressed, to be anxious. That's normal. Guys, we are here with Dr. Humair Yusuf. Is that the correct way to say your name, जी? Humair Yusuf? Yeah, absolutely. ठीक जी. आप साइकोलॉजी पढ़ाते हैं LUMS में? जी. काउंसलिंग, psychotherapist and psychologist हैं. जी. ठीक जी. पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर काफ़ी आपकी प्रैक्टिस है? ज़्यादातर पाकिस्तान में, मगर शुरू में मैंने कनाडा में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की. स्पेशलाइजेशन से आपकी जी आइडेंटिटी, रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, क्लास एंड रिलीजन. ये मेरे रिसर्च स्पेशलाइजेशंस, इंटरेस्ट कह लें. क्लिनिकली एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनालिटी, रिलेशनशिप्स. सर अगर मैं आपकी पब्लिकेशंस की लिस्ट पढ़ना शुरू करूं तो यहीं पे बैठे बैठे हमें शाम हो जाएगी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर दैट. मगर आपके पास डिग्रीज हैं फ्रॉम MIT, फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जहाँ से आपने मास्टर्स और PhD किया था. जी, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी एंड प्रिविलेज्ड. जी. आपके बारे में आपके एक स्टूडेंट ने कहा था जी कि he didn't just teach us psychology, he taught us how to look at ourselves without fear. तो आई थिंक वो दैट्स द थेरेपिस्ट इन मी. आई थिंक ज़्यादा सबसे पहले मैं थेरेपिस्ट हूँ. Right. एंड इवन व्हेन आई टीच तो द थेरेपिस्ट इन मी इज़ देयर. सर आप ही के एक और स्टूडेंट ने कहा था कि उनकी स्पेशल बात यह है कि वो हमें स्टूडेंट नहीं इंसान की तरह देखते हैं. I think very kind of them to say my Well, आइए सर इंसान की बात करते हैं. Let's talk about इंसान. Let's talk about पाकिस्तान. मेरा पहला सवाल आपसे होगा जी कि हमारी आइडेंटिटी ये हमारी अपनी डेवलप करता है या colonial hangover? देखिए, we like to blame colonial hangovers. Now, let's look at colonialism. The English were the last colonizers. उससे पहले we had Arab invaders, Persian invaders, Central Asian invaders. So why do we refer to colonialism only as English साहब colonialism? क्योंकि जख्म जो अभी हरा है हम अंग्रेजी ही बोल रहे हैं, वरना हम अरबी बोल रहे होते हैं, तुर्कमानी टर्किश बोल रहे होते हैं, कुछ और बोल रहे होते हैं, फारसी बोल रहे होते हैं. तो ये सब मिलकर जो हमारी आइडेंटिटी है, it is a combination of all of history. It is a combination of lived experience, जो हमारी
ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी जो तारीख़ है, और तारीख़ सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेज़ों की हो, सब मिल के अच्छा बुरा सब मिला है। तो अगर आप कहें हमारी आइडेंटिटी कहाँ से आती है, इट्स एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस, रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर, फेथ, एवरीथिंग कम्स टुगेदर। और माय इंटरेस्ट इज़ कि ये सारी चीज़ें मिक्स कैसे होती हैं, और फिर ये जब किसी को आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, as a psychologist, would you diagnose Pakistan as having an identity crisis? I would diagnose Pakistan as having low self-esteem. Really? सर हम तो जी वो हमजन्ना कौम है, पाइंदा कौम है, हर नहीं, जहाँ पे हमारी if Pakistan was a anthropomorphized patient sitting in front of me, I would say Pakistan is an individual or an entity with low self-esteem. We know who we are. Okay. We know what we contribute to the world. We know what the world thinks of us. We have low self-esteem. We know ये the आपका डायग्नोसिस पाकिस्तान के बारे में, and then we compensate for that by being nationalistic, Bravado. prickly, bravado, aggression. So if you want to look at Pakistan as an individual patient, it is a case of compensation for low self-esteem. सर कोई पाकिस्तान को ट्रॉमा भी होगा, कोई कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी भी होगा, आई मीन But trauma ज़रूर है, trauma of partition, trauma of colonialism, economic trauma, trauma of extraction. I think जो हमारी colonial history है, our trauma didn't end there, our trauma continued. I would say कि जो हमारी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसके भी ट्रॉमास थे, मगर उसके बाद जो हमारी अपनी हुकूमत थी शायद उससे ज़्यादा भी ट्रॉमास हुए हैं। हाँ जी, दुख तो बड़े दिए हुकूमतों ने जी, एक के बाद एक। सर ये मुझे बताइए, ये जो हमारी बीमारी है शनाख्त की या लो सेल्फ एस्टीम की, इज दैट समथिंग वी लर्न टू लिव विद? हमने क्या कबूल कर लिया कि जगह वैसे ही है? और कोई हल ही नहीं है। मसलन हम क्या करें? अगर ऐसा कोई पेशेंट मेरे सामने बैठा होता तो या तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसकी सेल्फ इस्टीम बेहतर करें, उसको दुनिया में निकालें, वो तो हम कर नहीं रहे ना। मगर हमारी सर अभी तो बड़ी रिसेंटली हमें कोई डिप्लोमेटिक सक्सेस भी मिला है, कोई हम जफ्फियां भी डाल के खड़े हुए हैं अरबियों के साथ, अमरीकनों के साथ, अभी तो खासी दोस्तियां बन रही हमारी, वी आर लाइक कमिंग आउट इनटू द वर्ल्ड। हाँ, तो छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़े खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी हमें अप्रूवल मिल जाती है तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सब्सटैंशियल हमारी अकम्पलिशमेंट्स आई डोंट नो हैं भी नहीं भी हैं, बट आई थिंक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा भी हमें कोई बूस्ट मिल जाए हम कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो सर पाकिस्तान का ये बहरान ये काबिल इलाज है कि नहीं? हाँ, हमारा मुल्क सही हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, मैं कोई ख़ास पुरुमीद नहीं हूँ, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। दैट इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन। चले सर, लेट्स कम टू अ सीरियस क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ नस्ल, मजहब और तबका, हाउ इज दैट डिफरेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड द वेस्ट? तो वेस्ट में देखें, स्पेशली अमेरिका, where the US, where most of the research comes, वहाँ रेस इज़ द बिग इशू। पाकिस्तान में मज़हब इज़ द बिग इशू। सर इज इट मजहब और कास्ट? Caste is big in Punjab. Once you leave Punjab as someone who's come from Karachi, ये कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता। Okay. बट कास्ट बाय एंड लार्ज, लोग अक्सर मुझसे पूछते थे आपकी कास्ट क्या है, मुझे तो पता ही नहीं थी। फिर मैं अपने वालिदैन के पास गया, मैंने पूछा कि मेरी कास्ट क्या है, आप मेरी ज़ात क्या है, उनको भी नहीं पता था। तो अभी भी आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं पता मेरी कास्ट क्या है। तो ये आई थिंक पंजाब में ज़्यादा इस पे लोग सोचते हैं या पूछते हैं। राइट। बट सो आई वुड से फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए जेंडर एंड रिलीजन, मज़हब, अच्छा वेस्ट में रेस एंड जेंडर आर द बिग वंस। और दोनों जगह जहाँ जो असल मसला है मेरे लिए और साइकोलॉजी के लिए इज़ क्लास। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, मेंटल हेल्थ
is hugely biased to upper middle class. जो गरीब लोग हैं, जो तबका है, उनको एक्सेस नहीं है, उनको इल्म नहीं है. तो साइकोलॉजी शुरू से एक अपर मिडिल क्लास पे फोकस रहा है जी. और ये अभी भी प्रॉब्लम है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी आवाम की तरफ लिया जाए, मगर वो बहुत मुश्किल है. सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया में. तो क्लास इज़ अ यूनिवर्सल इशू, मगर बाकी हमारे लिए रिलीजन इज़ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी. in America, North America, it's race. Europe, migration. Gender is a big, there's a simmering deal everywhere. तो similarities भी हैं और differences भी हैं. So coming back to the subject of identity, मेरा एक Indian friend है, वो मुझे कहता है जी कि Pakistanis are trapped in some sort of an imagined identity. कभी वो सोचते हैं कि जी हम अर्तुगरुल गाजी हैं, कभी वो सोचते हैं जी कि वो तारिक बिन ज़ियाद हैं. They don't think that they're Pakistanis. They always think they're somebody else. Is that true? On a broader social level, I think we are trying to manufacture an identity. Identity is organic. वो एक चीज़ आती है, कुदरती होती है. हमारी तारीख में I think it starts with first कि हम मुसलमान हैं. ठीक है, पाकिस्तान बना, उसमें फिर हमारी जो एथनिक्स, रिलीजियस, कल्चरल, वो सब दबाई गई. फिर हमें बताया गया कि हम अरब हैं. फिर तो वी बीन फॉर्स्ड आइडेंटिटीज. इसलिए वी कीप लुकिंग हियर एंड देयर. आइडेंटिटी टिपिकली डेवलप्स थ्रू your culture, through your religion, through your family, through your interests, through your accomplishments. तो identity एंड कल्चर मेरे लिए ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं. ये ऊपर से नहीं आती, ये कुदरती तौर से खुद ही बनती हैं और खुद ही तरक्की करती हैं. Organically grow. Organically. So who do you think is more obsessed with identity, Indians or Pakistanis? The sense I have is that previously it was Pakistan. We were obsessed in the Zia era, etc. We had this huge movement to define ourselves as Arab and link ourselves there. But जो अभी मुझे लग रहा है, seeing what's happening, reading the news, I have no direct contact with India, but what I read in the media, India now with their religious identity, whatever the reasons and all, I think India now is becoming very assertive of its identity. And perhaps we are becoming less so. Partly उसमें ये भी है कि the Muslim identity has been so compromised and damaged because of various things, Middle East, war on terror, all these things. So the Muslim identity became perhaps complicated, controversial. So we had to, I think, pull back from that. Indian, in their confidence and their self-assertiveness, are asserting BJP-led Hindu identity. अब कितनी देर ये रहेगा वो मैं नहीं कह सकता. चलिए सर, मज़हब और नफ्सियात की बात कर लेते हैं. Has being religious or being a religious state, has that, इसने कोई बुरा इम्पैक्ट डाला पाकिस्तान की नफ्सियात पे? बिल्कुल. बट इट इज़ नॉट, मज़हब ने नहीं डाला, इस्लाम ने नहीं डाला. ठीक है, जो इस्लाम को पॉलिटिक्स में लिया गया है, इस्लाम एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिक्स, एक्सक्लूजन, उसने लोगों की नफ्सियात पे उसका काफ़ी असर हुआ है. तो मैं ये कहूँगा कि जो इस्लाम को आर्टिफिशियली इम्पोज किया गया है, इस्लाम वाज वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. बहुत पहले से इस्लाम वाज इन द सब कॉन्टिनेंट. बट इन द लास्ट 20-30 years जो पॉलिटिकल इस्लाम, जो आइडेंटिटी, उससे आई थिंक नुकसान पहुंचा है लोगों को. नुकसान हुआ है जी. ऐसा मेरी एक दोस्त है, थोड़ी यंग सी, वो मुझे कहती हैं शी इज़ नॉट रिलीजियस बट शी इज़ स्पिरिचुअल. Is that one way of escaping religion, by being spiritual? You can, but you can be religious and spiritual. Right. For me, the problem is people who are religious but not spiritual. And that is where
I find religion becomes slightly problematic, where people get obsessed with the politics, the punitive nature, the punishment, the judgment, the exclusion, कि वो गुनाहगार है, वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है. When it becomes that political, exclusionary, फिर उससे फिर लोगों की नफ्सियात पे. But internally, if you have faith, if you have faith in God, if you are a Muslim, or if you have your own spirituality, that's fine. Both are very, it doesn't matter. I think spirituality varies from person to person. It doesn't matter from a psychological or mental health perspective. मैं कह रहा हूँ. Spirituality is important, and people who have genuine spirituality and genuine faith, for them it's a huge asset. साहब आपने पहले बात की थी स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस की कनेक्टेड टू द पाकिस्तानी मॉडल ऑफ रिलीजन. जरा एक्सप्लेन कर दीजिए, डज द पाकिस्तानी मॉडल ऑफ रिलीजन कॉज स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस? I say it would because if you ask the average person, their understanding of religion is ritual, राइट, is punishment. गुनाह और गुनाह, ठीक. बस ये है कि आप ये नहीं करेंगे, आप गुनाहगार हैं, आपको सज़ा मिलेगी. लोग का रुख उस तरफ है. अब जब आप इसी पे सोचेंगे तो फिर ज़ाहिर है परेशानी आपका खौफ, आपकी परेशानी बढ़ेगी. मगर ये हमारे मज़हब का एक बहुत छोटा हिस्सा है. मगर तवज्जो सारी इस पे है कि मैं काफिर तो नहीं बन जाऊंगा, मैं गुनाहगार तो नहीं होगा. अगर आप इसी में उलझे रहेंगे तो ज़ाहिर है परेशानी तो होगी. और अगर I'll ask you the $64,000 question, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जो अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ना खुद कुरान पढ़ें. आप अपनी जो पॉलिटिकल और उसको छोड़ें, आप खुद कुरान पढ़ें और उसमें आप देखें कि अल्लाह आपसे क्या कह रहा है. अल्लाह माफ़ करने वाला है, कि अल्लाह आपकी क्या 72 मदर्स से ज़्यादा प्यार करता है. 70 माह से ज़्यादा. हाँ, 70. So देखिए, ये हम भूल गए हैं. I totally respect that, Ji, but you as a serious psychologist are recommending a religious book to be read in translation as a tool for getting over spiritual distress? So it is not my place to judge people's faith. Of course. Right? जिसने जो मानना जिसने जो माने. ठीक. If a person comes to me with a religious worldview, I will work with them in that worldview. Right. तो अगर वो कहें कि देखें मैं समझता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ और तो मैं ये कहूँगा कि चलो आप कुरान से देखो. अब अगर वो इतना मजहबी नहीं है तो फिर मैं मजहब भी नहीं लाऊंगा, मैं वो देखूंगा. तो मैं आई विल रिस्पेक्ट माई क्लाइंट एंड देयर वर्ल्ड व्यू. तो अगर वो मज़हब के तरफ से देख रहे हैं दुनिया को, तो मैं भी वैसे ही देखूंगा. और मैं उनसे कहूँगा कि देखो, फिर अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो आप फिर कुरान जाओ. आप किसी आलिम के पास नहीं जाओ, आप कोई पॉडकास्ट नहीं देखो, आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम से नहीं देखो कि लोग क्या कह रहे हैं. आप खुद कुरान पढ़ो, खुद समझो कि अल्लाह क्या कह रहा है, और वहाँ से आपको तसल्ली मिलेगी. I can understand that, जी. So sir, आप उस क्लाइंट से कैसे डील करेंगे जो कि मानता है कि जो मेरे साथ हो रहा है ये इट्स अ टेस्ट फ्रॉम गॉड, और क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार था, मुझे इसका अजर मिल रहा है. हाउ डू डील विद दैट? So I would say again, look at the scripture. आप कुरान पढ़ें. कुरान में, as far as I know, I'm not a scholar, Of course. but आप ये देखें कि God is merciful. ठीक जी. ये बहुत दफ़ा कहा Of गया. course. रहमान ये रहीम. गुनाह और सज़ा पे के कम जिक्र है, मोहब्बत पे, माफ़ करने पे ज़्यादा है. आप वो देखें. हमारे जो आलिम और मौलवी वो सज़ा और काफिर और गुनाह पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं. कुरान में तवज्जो कहीं और है. तो अगर आप दिल खोल के कुरान पढ़ेंगे तो आपको सुकून मिलेगा.
सर मेरी कैनेडियन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था कि पाकिस्तान में रिलीजन इज यूज्ड एज अ टूल फॉर social control rather than personal spiritual achievement or personal spirituality. Do you agree with it? Yes, magar not just in Pakistan. I think religion uh, all over the world France में सर? to varying degrees. हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ obviously कर रहे हैं. At different periods in their histories, different countries have used religion in different ways. And that is where the danger is. When religion is used as a means to control, to judge, to exclude, to punish. But with religion is a matter of faith. It can be a source of great strength, of benefit, cohesiveness. So that's where I'm quite clear. On a personal level, faith is very rewarding and तो फिर productive. सर एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन बनता है, हमें थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या सूफी सेंट से बात करनी चाहिए, किसी से कुरान समझा दें? देखिए, कुरान तो आप खुद समझे. वो तो मैं सबसे कहूँगा, आप खुद पढ़ें, आप उर्दू में पढ़ें, आप इंग्लिश में पढ़ें, आप खुद पढ़ें. अच्छा, as far as Sufism, healing traditions, equally good. Equally good. Equally good. Because if you look at what do Sufi traditions do, it's love, it's forgiveness, Right. acceptance. Right. Those are the essentials of therapy also. So ज़िक्र नीम शबी मुराकबे ये सुरूद. So ये काम आप थेरेपी भी कहेंगे कि भाई रात को उठो और जिक्र करो? नहीं, वो मैं नहीं कहूँगा. वो मैं कहूँगा कि अगर आपका ईमान ये कहता है बिल्कुल करो, अगर नहीं कहता है आप ना करो. वो मेरा काम नहीं है. ईमान उस शख्स का है, मगर अगर उसको सुकून मिल रहा है, बिल्कुल. और अक्सर जो सूफी सेंट श्राइन्स हैं, they do create an atmosphere of love, of acceptance, and therefore healing. अगर आप थेरेपी में पूछें तो द बेसिक्स ऑफ थेरेपी आर एक्सेप्टेंस, कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. वो आपको थेरेपिस्ट से भी मिल जाएंगे, वो आपको एक सूफी से भी मिल सकते हैं. हाँ, आपके पास जो डॉक्टर्स भी होते हैं जो आपको जज करेंगे, जो आपको बुरा भला कहेंगे. तो जहाँ आपको सुकून मिल रहा है, जहाँ आपको शिफा मिल रही है, आप को बिल्कुल उस तरफ जाएं. सर आपने तीसरा कीवर्ड जो बोला है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. थेरेपिस्ट हैव टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट. क्या हमारे जो सूफिया और औलिया हैं, जो आजकल हमारे पास सूफिया और औलिया हैं, इनके पास अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है, या वो तो आई होप इस पॉडकास्ट के बाद भी सर काटने को तुले होते? तो मुझे तो इसी का डर है ना जी. तो अगेन द जजमेंट, द क्रिटिसिज्म, द एक्सक्लूजन के तू काफिर थे मैं काफिर. हाँ, राइट. उससे मुझे डर. आई थिंक जो हमारे बुजुर्ग थे, जो ओरिजिनल सूफीज थे, जिनके दरगाह पे लोग जाते हैं, आई थिंक दे वर पीपल ऑफ ग्रेट लव एंड ग्रेट कंपैशन. अभी भी होंगे, मगर दूसरे किस्म के भी लोग हैं जो सर काटने पे आ जाते हैं. जी जी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन हिस्ट्री जी, हमारे मुस्लिम सेंट्स के पास हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई सब जाया करते थे वो मुलाकात करने के लिए, फैज़ लेने के लिए. इट वाजंट अ इशू फॉर एनीवन. ये तो शायद कुछ ज़्यादा और के बाद ही मसले शुरू हुए थे. तो जहाँ एक असल सूफ़ी है, और अगर कोई असल मजहबी आलिम हो, तो बिल्कुल जहाँ शिफा, हमें कहाँ पता आपको कहाँ से शिफा मिलेगी, कहीं से भी मिल सकती है. ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हिजरत. हाउ डज माइग्रेशन अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज अब्रॉड? ये हिजरत का ज़हन पे क्या असर होता है? So migration is a very complex subject. It's being studied. It's not a new subject, but it's in different stages of the world. It's had different expressions. So जो आजकल की migration है, I think to begin with, there's a sense of liberation. A sense of liberation. A sense of liberation. Obviously, there is the hope, but I think जो असल में लोग जाते हैं, it's because there is a sense that they are being taken advantage of. They are being oppressed. Who's taking advantage of them? The Everyone? state, the system, society. People back home. People back home. So
So obviously they go for economic opportunity, for better futures, तो वो एक तरफ है. But I think there's also a sense of being exploited. I think most Pakistanis, consciously or unconsciously, live with the sense that we are being exploited. We are an extractive state. We are. So there's that freedom. Now, of course, you fall into another system. So it starts with that. But then there are questions of identity. Who am I? Do I fit in? If I don't belong here, am I not accepted here? Turn to religion, turn to your own ethnic community, turn to nostalgia. So then there is to rebuild an identity. अब उसमें कुछ लोग बिल्कुल अपने आप को एक वेस्टर्न सेक्युलर तरफ भी ले जाएंगे, कुछ लोग अपने रूट्स को कुछ ज़्यादा ही उछालेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं कराची से हूँ, मैं पेशावर से हूँ. तो आई थिंक ये होता है कि एक तरफ से आपको एक आज़ादी मिलती है, बट दूसरी तरफ से आपको अब फिर ये सवाल का जवाब देना पड़ता है कि मैं कौन हूँ और उस who am I, and that takes you in different directions. So in directions में जो एक डायरेक्शन होती है, you start a family abroad and then you have children. Second generation South Asians, क्या उनके ऊपर भी कोई ट्रॉमा है या they are free from that? That depends on the parents. अब मैंने ऐसे भी लोग मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूँ कनाडा में जो 70s और 80s में पाकिस्तान से चले गए और फिर पाकिस्तान से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है. पर अगर उन्होंने अपने बच्चों को 80s पाकिस्तान के माहौल में पाला है, तो अब वो यहाँ ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे. साहब ये तो धोबी का घर का ना घाट का. हाँ, तो वो भी मैंने देखा है. कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल काट लिया है कि पाकिस्तान हमने छोड़ लिया है, अब हम कनेडियन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम न्यूयॉर्क के, कनाडा, ठीक है, हम सैन फ्रांसिस्को के हैं. कुछ लोग एक बीच का रास्ता ढूंढते हैं कि हमने यहाँ भी रहना है मगर हमने अपने मज़हब, अपने कल्चर से भी ना. तो हर किस्म के आपको लोग मिलेंगे. Those who have embraced a Western identity, those who have rejected one, those who have embraced or even inflated or created an artificial, exaggerated Pakistani identity जो पहले नहीं थी. So nostalgia, अभी आपने वर्ड यूज किया था, ये blessing है या disease? Again, how is it used? If nostalgia is used to create an identity, to have a sense of rootedness and belonging, ठीक है. If nostalgia is used as a way to stop you from progressing, as a way to suffocate you, as a way to stop you from integrating and processing and developing a new identity. Because ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तान से उठ के अमेरिका या कनाडा चले गए हैं तो आपकी आइडेंटिटी उसी तरह से आगे जाएगी. It will be an identity that is Pakistani and American or Canadian or English. You cannot have a purely Pakistani identity living, working, going to school in America. Now, if you're choosing nostalgia to stop that growth and to hold on to something imagined or that doesn't exist, then it's a problem. साहब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका, उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था जी कि माइग्रेशन क्रिएट्स फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटीज एंड हायर रेट्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग साउथ एशियंस. क्यों जी? So higher, I would like to know, higher than who? Higher than the baseline population. I mean, usually when they say higher or lower, they usually use a baseline. Because one thing to look at, I think, is that I suspect the rates of anxiety and depression in Pakistan, in the poor countries, are much higher. So as compared to immigrated South Asians? As opposed to, say, your average population in first world countries. Because the stresses, the quality of life, the day-to-day stresses, the uncertainty, the unpredictability. So I think our baseline is much higher. So chances are you take these same people and you don't put them through any migration stress, your baseline will be higher anyway. So if you just were to compare
a population in a first world country in Europe or America with Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, anxiety levels here, depression levels here are likely to be higher. Even though we may not admit it or give it the same label, but I think wo hoga. So, but the study also gave the same data about immigrants, people who had gone from Now, these immigration adds an additional stress. Additional stress. Right? Of belonging, of identity, of losing your identity, of being accepted by the new identity or by the local population. So a whole other level of stress is added. So it makes perfect sense. Agreed. And then your support systems, your extended family, you're cut off for those. तो बिल्कुल समझ में आता है. I do not see any reason to doubt that. Right. सब ये बताइए, देसी parents, why do they bring their kids to you when their kids want to marry somebody outside their brotherly or caste or religion? ऐसा क्यों होता है कि कहते हैं therapist से बात करो? So I think parents feel, not across the board, but a large segment or some segment of society feels that they have the right to control their children's lives. And any deviation from that control, any resistance, is a problem. बच्चा बात नहीं सुनता. So, to me, that's not a problem necessarily. It's more a value conflict rather than a mental health issue. Right. And that's not my role, really. Of course. आपने बच्चों को इतनी समझाना कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो कर लो. ठीक. साहब, अभी आखिरी सवाल नॉस्टैल्जिया के ऊपर. Again, it's a comparison. Who do you think is most nostalgic, Pakistanis or Indians? I would say about the same. About the same. It may be changing now in the last few years, but as long as I was in the US or Canada, the diasporas were roughly the same. Maybe now with Indians becoming more assertive, it may be changing. But जब जो मैंने खुद देखा है, कोई खास फर्क नहीं होता. जब हम एक दफ़ा सब कनाडा में बैठे होते हैं तो कोई पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, टर्म भी देसी यूज होती है, which includes इट्स अम्ब्रेला टर्म कि भी श्रीलंका से लेकर नेपाल तक और बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक आप सब देसी हैं. चलो शायद अफगानिस्तान में भी ये स्टेप टू फार, बट स्टिल आप ये बात समझ गए, पूरा एक ब्रॉड अम्ब्रेला है कि भाई ये सब देसी है. ठीक. ये बताइए साहब, हाउ डू पाकिस्तानी क्लाइंट्स नेविगेट इश्यूज ऑफ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी इन थेरेपी? Okay. So if you recall, I said class is a big issue. Right? So therapy is very much a privilege of the upper and the upper middle classes. Right. So the upper and upper middle classes have exposure to Western ideas, Western ways. So their navigation of gender and sexuality is pretty much like the West. Pretty much like the West. Yes. So the people who are navigating it successfully are roughly the same people who can come to therapy. So the real question is, the people who do not have the resources, the knowledge to come to therapy, how are they navigating issues of gender and sexuality? That is an unknown. And that is what is frightening. Phil Wakji, bataiye, is there a link between gender oppression and psychological distress? There's a link between all kinds of oppression and psychological distress. You can be oppressed on the basis of your race, of your gender, of your faith, of your class, or disability, age. There's this concept of the big seven I've just listed. So all of those are the broad sort of oppressions. Right. And all of them will cause psychological distress. Yeah, gender is a big one. पाकिस्तान में एक बड़ा मैंने सुना है कि हमारे पास एक कल्चर है, culture of shame. What exactly is that? So I remember seeing on a TED talk somewhere. I'm a big fan of TED talks. Oh, love what is the difference between guilt and shame? So, and this speaker, I think it's one of the most widely watched TED talks, said, guilt is I made a mistake. Shame is I am a mistake. So I think that sums it up very well. Guilt, I am a mistake. My parents didn't want me. I mean, I have a mistake. There's something flawed with me. There's something wrong. Guilt is I did something wrong. I did something wrong. I can make up for it.
ठीक. I can fix my mistake, I can ask forgiveness, I can right the wrong. Shame is there's something fundamentally inferior, inadequate, uh, disadvantaged, defective, So not how would you put disadvantaged, shame defective. into Urdu? When parents पूछते थे शर्म नहीं आती तो शर्म is shame या कोई और चीज़ है ये? I think sharam is a mild form of shame because we culturally use shame and obligation as a way of exerting control. Shame and obligation. Yes. Okay. Children are made to feel, this is a broader thing, not just our culture. Children made to feel that our parents brought us into this world. ठीक. उन्होंने हमें पैदा किया, पैदा पढ़ाया, किया, खाया, हाँ, परवरिश बिल्कुल. की, खिलाया पिलाया, पढ़ाया, पढ़ाया. लिखाया, ठीक जी. तो अब उन्होंने हमारे लिए ये खिदमत की, अब हमें उनकी बात माननी है, हमें उनकी खिदमत करनी है. Okay. So that's sort of an implicit contract. Implicit contract है ये. Yeah, explicit भी है. अच्छा, okay. And when you don't fulfill that contract, हाँ. shame is often used as a way, okay, by not fulfilling this contract, you are disrespectful, ungrateful, you are bad, you betrayed us, you've let us down. So I think that's in very broad strokes. I don't want to, it's a broad generalization. So there is a stigma around sexuality, especially in our South Asian culture. Is it culturally focused or just a refusal for us to grow up? That's a good question. I don't think it is. I think, again, it's a class thing. I keep bringing class Right. in. So if you look at our upper classes, they have... देखिए जी वहाँ पे इशू है. अगर मैं जानता हूँ लोगों को जिनके बच्चे जो हैं वो ट्रांस हैं या LGBTQ communities हैं. So, but that's true all over the world. हाँ जी, Right? but not There very is a happy trauma. about it. At least the less of an acceptance I've seen in Pakistan as compared to the West. Yeah. But we are where we are 10 years, where we are compared to where we were 10 years ago, there is a greater there. There are small pockets of LGBT communities, there are spaces on campuses, in schools. The awareness, I went to an elite school. Our attitudes, my attitudes, I saying the kind of words and jokes we would tell when I was in school, unacceptable now. So which elite school did you go to? Karachi Grammar School. I see जी. And the words you guys were using there, you would find them unacceptable now. Yeah. But it wasn't just that Because school, the world has it was changed. all over the world. ये तो Right? वही बात है जिन्हें कि 40s में या 30s में there was the N word being used in America literature के अंदर. Yeah. Okay. Times have changed. We now use better words and more modern words. Yeah. So, I mean, and not just there, but when in high schools and colleges, even in the movies of the 80s, 90s, the way LGBTQ characters were portrayed, they were mocked, they were condescended to, they were seen as, somehow deviant. We were all part of that. And that has changed. Even in our culture, that kind of open contempt or condemnation of homosexuality is not there in our top schools and colleges. So do you know how many likes Maria B got on the anti-LGBTQ trans rant she went on? Yeah, so there's a fear, right? So for every action, there's an equal and opposite reaction. So I think the anti-LGBTQ lobby is far more vocal. Yes. But there is a smaller supportive. There are safe spaces in our main cities. Plus, I think if you look at the other end of the spectrum, in our working classes, in our villages, there's all kinds of things going on. I mean, in Karachi, for example, it's known, there's certain known places where a lot of homosexual activity takes place openly. So it's the middle class that's the most conservative, and that's universal. We are not unique in that. How do we create LGBTQ 2AIS plus safe spaces? I think it has to start with the youth. It has to start by normalizing it. Normalizing it. इससे क्या मतलब है जी आपका कि I think
the starting place is to understand nobody chooses to be gay. Nobody would decide, oh, I have a choice of being gay or straight, and I choose to be gay. That would just be insane because the world is so hostile to homosexuals across the world with different levels of hostility. But so anybody given a choice would want to be straight, would want to be, to fit into convention. Life is easier. So have you seen the dating scene in Lahore? There are times where I think, yeah, the gays must have it right. Well, maybe. Coming back to the point, yes, you are absolutely right. Right. So nobody would choose. Nobody would choose. We don't choose our. I mean, that's what science is telling us today. So we don't choose our desires. So I think that's where it starts from, right? And I think there is now in the more science we study, this is not a choice. So now you are born, there's the famous song Born This Way, and I think that's fairly accurate. So I think that's the starting point. This is not like some deviant or degenerate choice. It is just a certain desire. मुझे तो पता है कि जी इल्यूमिनाटी भी इन्वॉल्वड है इसमें और पता नहीं क्या-क्या चीजें हैं और ये पूरी ग्लोबल कंस्पिरेसी है टू टर्न द होल वर्ल्ड गे. Yeah. I think I've heard all kinds of stuff. Now, again, people have a choice. Do you want to live as a sexual being and assert your sexuality or not? That we have a choice. I mean, even the last Pope, now the Catholic Church is very hostile to homosexuality, but the last Pope also said, who am I to judge? He also, so I think there's something to learn from there. And the idea would be to accept that people who have desires different from ours are humans as well. They don't fit into the conventional mold. They have that, and that's the starting point. साहब मेरा एक ट्रांस फ्रेंड है, खुद भी साइकोलॉजिस्ट है. मुझे वो समझा रहा था जी कि साउथ एशियन सोसाइटीज़ ये रिप्रेस करती हैं इन द नेम ऑफ कल्चर, बट इट इज़ एक्चुअली जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ कंट्रोल. I think that's true for all societies. Gender, sexuality are broadly ways of controlling people. They are some of the most basic categories. Humans like categories. We're comfortable with categories. We're categorizers by nature, and for the most part, we need it. It helps us function efficiently. And I think the first category we grow up with is man, woman, boy, girl. तो जब वो थोड़ी सी हिलनी शुरू हो जाती है, and then we often define sexuality and gender interchangeably. So being a man is desiring a woman, being a woman is desiring a man, although that is now contested whether that needs to be the case or not. So by shaking or destabilizing those categories, it causes a lot of distress. रौला पै जाता है. Exactly. So that's why. और सिर्फ यहाँ नहीं, I mean, we have all over the world, there is great hostility. While there's varying levels of acceptance, hostility तो अपनी जगह है, हर जगह. Default hostility. Hostility. I mean, आप अमेरिका में देख लें, there's a backlash. If you look at what Trump is doing, there is a huge anti-woke हुए पे पता नहीं अभी जो जनरल्स को बुला के उससे पता नहीं क्या स्पीच दी थी, जनरल्स बैठे परेशान कि यार क्या कह रहे हैं आप. So I think वो the very fact when you start destabilizing gender and sexuality, one, it weakens controls. And I'm not saying there's some group of people sitting there, controlling this or manipulating this, but broadly, society has its sort of inbuilt mechanism of controls, and they are shaken. And then that category is shaken, it causes much anxiety. क्या वो कहते हैं जी कि आशिकी पागलों का काम नहीं, आशिकी होशमंद किया करते हैं. So पाकिस्तान की बात करते हैं जैसे लोग पाकिस्तान भी कह रहे होते हैं. What I've seen or what I've experienced in Pakistan is कि predominantly, शायद मैं क्लास की दोबारा बात करने लगा, कि लोग पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं नफ्सियाती इलाज कराने के लिए, थेरेपिस्ट नहीं ढूंढते. क्यों? So again, I think this is a class thing. So there are a lot of reasons. So पहले तो लोगों के पास शायद थेरेपिस्ट का इल्म नहीं है, शायद पैसे नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगा होता है.
शायद पैसे भी हैं, इल्म भी है, मगर उनको थेरेपिस्ट मिलता नहीं है। सर इन सारी वजहों के अलावा जो वजह मुझे बताई गई थी वो है स्टिग्मा। अच्छा, अब स्टिग्मा इज चेंजिंग in the young generation. Again, in a certain class, the youth, there is the opposite problem. लोग मेरे पास आते हैं, children, young adults, कि I'm experiencing depression, anxiety, मैं बात करता हूँ, और like you just had a breakup. Of course you're Part sad. of life. Part of life. जिंदगी चलती So रहती है। we've gone the other extreme, right? Okay. So, but that's a class thing, right? So those who have the resources, the wherewithal, the knowledge, Right. in a certain upper middle class, the stigma is going or it's gone. ठीक है। Yes, our middle classes, our working classes, a lot of that is lack of resources, lack of knowledge, और एक हद तक स्टिग्मा भी होगा, बट वो स्टिग्मा जल्द और जल्द ख़त्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। अभी आपने बात की जी ओवर डायग्नोसिस की, इज दैट हैपनिंग इन पाकिस्तान एज वेल? क्या लोग अपने आप को डायग्नोस करके बताते हैं जी मुझे तो जी ये मसला है, या मुझे गर्लफ्रेंड ने कह दिया मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो अभी बस ये होने हो रहा है। Again, within that certain class, the one who has access to social media, internet. सो मैं अपने आप को डायग्नोस कर लूँ, मुझे बाइपोलर भी है, मुझे बीपीडी भी है, मुझे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी भी, सारी मुसीबतें मुझे पड़ी एंड आपके पास पहुंचो जी, आप मुझे सही करें। बिल्कुल, आप कहा क्या आप ये कर सकते हैं। Personally, I discourage diagnosis. I myself, the way I've been trained is not to work with diagnoses. Diagnoses are labels, they have clerical, bureaucratic use. Clinically, they are limiting, they pigeonhole people. Right. Mental health doesn't fall into neat categories. ठीक है, it depends if somebody has to pay for it, you need a diagnosis, insurance, state. So that way diagnosis, in my practice, the way I've been trained, is to disregard diagnosis, to not get caught up into that, is to focus on the experience. जी, मगर मसला ये होता है कि बच्चे इंस्टाग्राम पे कोई रील देखते हैं, उसके बाद फैसला कर लेते हैं यार ये मेरी मुसीबत है। तो वो फिर मैं देख लेता हूँ, but I usually discourage and I mostly normalize it. I do see, मैं ये देखता हूँ कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है या ये कोई असल में कोई नफ्सियाती मसला है, बीमारी है। सबसे पहले तो वो देखना होता है। अक्सर ये एक ज़िंदगी का आम हिस्सा होता है जो लोग जिससे गुजर रहे होते हैं। सो ये सब बता दीजिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप, हमारी नफ्सियात पे उसका क्या असर होता है और कितनी बहुत अहम है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं सबसे कहूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी करें। नींद पूरी करें, इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर आपको डरा दिया इस बात से। मैं कोई 4-5 घंटे सोता हूँ और मैं सोच रहा हूँ किसी नफ्सियात के माहिर के पास जाऊँ कि मुझे गोलियां छोड़ दिया कि मैं आराम से सो सकूँ। नहीं हो सकता, आपकी ज़रूरत यही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर रात हो रही है, कल आपका इम्तिहान है, आपके पास ये है कि मैं 2 घंटे पढूं या मैं 2 घंटे सोऊं, सो लें। मैं कहता हूँ सो लें। आपको नींद से आपके बेहतर होगा। आप वो जो 2 घंटे अपनी नींद काटेंगे उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। अगले दिन परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो वो तो स्टडीज भी शो कर चुके हैं, लैक ऑफ स्लीप मैथमेटिक्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, इट हैज अ हॉरिबल इम्पैक्ट। देयर इज नो जस्टिफिकेशन। और अगर किसी वजह से आपको एक दिन नींद कम मिली ना, आप उसको फौरन पूरी करें। अगले दिन पूरी करें। अगले दिन आप दोपहर को सो जाएं, रात को नेक्स्ट डे जल्दी सो जाएं। ओह वाओ। सर मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान अभी जो इसका करंट स्टेट है, इज दैट अ फेलियर ऑफ फंडिंग और इमेजिनेशन? फंडिंग, आई थिंक फंडिंग का मसला। आई थिंक इट्स जस्ट आवर ओवरऑल हेल्थ केयर इज सो बैडली फंडेड, और उसमें ग्लोबली मेंटल हेल्थ गेट्स अ स्मॉल चंक ऑफ ओवरऑल हेल्थ केयर फंडिंग। हमारी हेल्थ केयर फंडिंग ही नेग्लिजिबल है, तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम है। इमेजिनेशन का भी शायद होगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। इन स्कूल्स भी यूज एज अ फ्रंट लाइन फॉर मेंटल हेल्थ। एब्सोल्युटली। तो फिर हम ये क्यों नहीं करते? इमेजिनेशन तो यूज नहीं की अभी तक, स्कूल्स हमारे पास क्या। बट अगेन आप देख रहे हैं कि अगेन द एलीट अपर क्लास स्कूल्स are coming there, and I'm hoping gradually over time the rest of our education system will follow, right? And it doesn't have to be too much. You can just normalize it, provide a safe space, allow people to be vulnerable, and give them the option of seeking help. You don't even have to provide the help. ये नहीं कि आपने काउंसलर बिठाना है और वहीं इलाज करना है। आप सिंपली ये
ये कल्चर होना चाहिए कि अगर आपको घबराहट है, परेशानी है, वो ठीक है, ओके, आप नॉर्मलाइज मदद करें. सीखें, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप तो स्टार्ट वहाँ से लें. So what's more common in Pakistan in your experience? Depression और यार इस बारे में बात मत करो. इस बारे में बात मत करो. मुझे कह रहे हैं सर किस बारे में बात मत करो. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आवर इंस्टिंक्ट इज टू सप्रेस एंड डिनाई इट. अगेन, अब ये क्या हमारे मजहब की वजह से हमें मसला है? कल्चर ने हमें एनफोर्स किया कि यार सफर पेन खबरदार आवाज नहीं निकालनी, इल्तिजा नहीं करनी. इज दैट समथिंग कल्चरल या? नो, इट्स जेंडर्ड. ओके. तो men all over the world are socialized not to show weakness, vulnerability. So एक तो मर्दों में तो ये मसला है ही है. दूसरा, रिसोर्सेज नहीं है. अगर आपने कह दिया कि मुझे परेशानी है, मुझे डिप्रेशन है, तो आप कहाँ जाएंगे? तो अक्सर इनफैक्ट व्हाट वी हैव सीन इज कि in South Asian populations, depression is often manifested physically. बदन में दर्द होती है जिसकी और कोई वजूहात नहीं है. तो और वो फिर डिप्रेशन को आप ट्रीट करें तो वो भी बेहतर होता है. Psychosomatic pain. Psychosomatic pain, which is depression. So there is a theory कि the way we label, describe, experience our illness is also linked to the resources available to cure it. So जैसे अगर आप किसी गांव देहात में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, अफ्रीका में कहीं हैं, और आपको परेशानी है, अब ना आपके पास हस्पताल है, डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, तो उस वक्त शायद आप कहें कि मुझ में कोई जिन भूत कोई, क्योंकि उसका इलाज आपको मिल जाएगा ना. कोई आपको आलिम मिलेगा, कोई जो आपको फूकेगा, पड़ेगा, कोई पुड़िया देगा. Interesting. Okay. अब अगर आप वहाँ कह रहे हैं कि मेरे सेरोटोनिन लेवल्स कम हैं, तो उससे आपको कुछ नहीं फ़ायदा ना. तो आपकी जो वी रिप्रेजेंट इलनेस बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल. तो सेम वे अगर आप आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं और आप वहाँ कह रहे हैं कि मुझ में कोई जिन चढ़ गया है, हो सकता है वहाँ भी आपको, या आप टोक्यो में बैठे हैं, न्यूयॉर्क में शायद मिल ही जाए आपको, बट टोक्यो में या अगर आपके सेरोटोनिन लेवल्स डाउन है, आप कह सकते हैं I'm touch starved. हाँ. Right. So you can have a different language and different interpretation of what's happening. Yeah. So a lot of the way we represent illness is based on the resources available. So what's the therapy myth you hate? Lots of them. बताइए. कौन से? One is कि people come to a therapist and say, fix me. मैंने कुछ नहीं करना. We are going on a journey. Right. You will fix the process. The process is what will fix you. We will go on a journey together, and so I won't fix you. Medicine won't fix you. Or people come and say, fix my daughter, fix my son, fix my husband, fix my wife. So I hate that because it's a journey. And it's not just the therapist. Therapist is one part. It's the individual. It's the support system. It's their life. So it's a communal effort. ये सारा बोझ therapist पे डालना, उससे किसी को फ़ायदा नहीं है. द सेकेंड इज जो मूवीज़ में एक ब्रेक थ्रू होता है ना, एक aha मोमेंट और सब कुछ सही हो जाता है, वो कभी नहीं होता. कभी नहीं होता. थेरेपी इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट्स आर ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल, और अक्सर पता भी नहीं लगता कि क्या चीज़ थी जिससे बेहतरी आई. मगर आज बताया था फ्रॉइड ने कहा था the moment the subconscious idea comes into the conscious, that's the aha moment, that's the eureka moment. फ्रॉइड इज लार्जली डिस्क्रेडिटेड. So मैं बहुत बुढ़ा हो गया उससे, मैं आखिरी बार फ्रॉइड ही पढ़ा था. अब ये अंडरग्रेड के ज़माने पढ़ना चाहिए, बट आई थिंक थेरेप्यूटिकली देयर इज हम काफ़ी Of course, हाँ, no information. I mean, जारी बात है, this is not medical advice. And yes, I critiquing फ्रॉइड तो बिल्कुल ही टिकटॉक के बाद फेंक दिया उन्होंने. So एक और बात, अभी हमने डिस्कशन की थी क्लास के ऊपर और पाकिस्तान के एलीट के ऊपर. Coming back to the same point, therapy is only available to them, and even amongst them, those who care for it. So, real therapy is being practiced for only a microcosm of the Pakistani society. Unfortunately. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? They are seeking alternative remedies. Okay. They are self-medicating with drugs, alcohol. They are suffering in silence.
Their depression, anxiety may be manifesting in violence, in substance abuse, um, traumatizing others, or they are getting support from extended families, maybe religious figures, वो शायद ढूंढ रहे हैं कोई अपना इलाज. कुछ कर रहे हैं मगर सही नहीं कर रहे. सही भी हो सकता है कभी. If the Alcohol support, is cured what? short term. Short term, it does. Drugs and alcohol help you numb and avoid pain in the short term. Long term, it makes everything worse. Long term मुझे आपका liver गया, जान गई. I mean, it's not easy to deal Yeah. with those issues. Yeah. So that's why, I mean, numbing and avoidance, again, all over the world is a very common, through drugs, alcohol, TV, gambling, is a very common expression of depression. सही कहा जी आपने. कनाडा ने भी cannabis legalize किया और हमें party on कर दी उन्होंने. So what do South Asians respect more, in your view? Power or the truth? Interesting. I would say power. Power. And that, I think, is understandable because we live in countries where power is used excessively, where recourse to rule of law, justice is erratic, unpredictable, and truth has lost its value. Truth is already subjective and compromised. So, and I'd say this not as a judgment. I say it from a place of acceptance and understanding. That नहीं सर, आपको मैं एक आखिरी ट्रूथ देता हूँ. इंडस की एक आखिरी आवाज़ फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था कि जो हमारे साथ डिस्कशन होगी, कंक्लूजन यही होगा कि अमीर लड़की को थेरेपी दी जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर सीबीटी दिया जाता है, और गरीब लड़की को कहा जाता है बेटा सब्र करो. I cannot disagree with that, unfortunately. Will there ever be a solution to this? I think so. I think if you look at the West, right, first world countries, their mental health is about 20, 30 years behind, maybe 50 years behind physical health. साहब अगर कनाडा मुझे आज अपॉइंटमेंट चाहिए थेरेपिस्ट के साथ, I have to wait 9 months before I see a therapist. ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स तो वहाँ भी हैं, राइट. सो और जैसे जो हमारा लैग है इन टर्म्स ऑफ जस्ट जनरल हेल्थ केयर, Right. हमारा वही लैग है मेंटल हेल्थ का. In Allah Masabri. That's what we keep telling ourselves and keep doing the same thing. लेकिन सर आपसे एक बड़ा स्टूपिड सा सवाल पूछना है. एक दफ़ा मैं एमिरेट्स की फ्लाइट में जा रहा था, ये लाहौर से दुबई. खुदा की करनी ऐसी हुई जी, मेरी टिकट अपग्रेड हो गई बगैर किसी बोला कि धक्का धुक्का लगे, मैं ज़रा बिजनेस क्लास में बढ़ गया. I sat there for about 4 hours, and for that 4 hours I did not feel depressed. ना मुझे किसी एक्स की बेरुखी का ख्याल आया. इनफैक्ट मुझे ये ख्याल आया कि आई डिजर्व दिस. हर बार मेरे साथ यही होना चाहिए. ये क्यों? So, well, business class is very nice. Of course. वहाँ तो कोई भी वहाँ अल्लाह दे और बैठ बंदा जाए, ले, ठीक जी. बड़ा मजा आता है. But so the interesting thing is that when good things happen, most people believe they deserve them. Yes. It's something we have done. It's our hard work, our qualities. Finally दुनिया recognize किया है. ठीक जी. When bad things happen, we blame. Why me? ये क्या किया खुदा ने मेरे साथ? So these are called situational and dispositional attributions. So and this is it's a very common psychological phenomena that in certain areas we talk about your own inherent qualities in good areas, and in certain areas you talk about systems, genetics, you talk about things that are not linked to you, which is a discrepancy. You can't have it both ways. Why does therapy not work for some people? मैं कुछ लोगों को जानता हूँ 20-20 साल से थेरेपी पे जा रहे हैं, फिर वही कहानी, फिर वही ट्रॉमा, बचपन में ये हो गया था, निकी सी मेरी माँ सड़ गई, बड़ी हुई मेरी माँ मर गई. वो कहानी खत्म भी नहीं होती, वो ट्रॉमा रुकता ही नहीं है. Does therapy not work for some people? It's possible. Again, it could be that the trauma is too great, the genetic predisposition for mental health is too great, or it could be they haven't found the right therapist,
or the right approach. There are hundreds of approaches of therapy. So things need to fit together. An approach, a therapist, where there's a good rapport, safety, comfort, Medication. trust. And अक्सर वो भी नहीं होता, मगर फिर उस वक्त जो थेरेपिस्ट का काम होता है वो सहारा देना, सपोर्ट देना. क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे पास भी आ रहे हैं जो मैं ये नहीं कह सकता कि ये शायद कभी अपनी परेशानियों से निकले. कभी नहीं. अल्लाह करे निकल जाए. आई होप दे डू. हर शब गम की सैर हो जरूरी तो नहीं. बट सच सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं. In which case, then the therapist's role is to support, help them manage, provide assistance, and so on. And that's equally important. Or sometimes also, the therapist is occasionally doing nothing, but is the one person that in that person's life who doesn't judge, criticize, blame. So sometimes that's the therapist's role. You know, ये तो सब ट्रांसफरेंस के इशू शुरू हो जाएंगे अगर थेरेपिस्ट ये इस किस्म के कनेक्शंस हो रहे हैं थेरेपिस्ट. नहीं, I mean that's part of therapy. You're not going to judge. You're going to be supportive, understand. Unconditional positive regard. Yeah. जी बिल्कुल. Acceptance, congruence, unconditional बिल्कुल, ये positive. तीन रूल जो थे Yeah. बिल्कुल ठीक है. Right, so that's sort of it. So sometimes that is valuable itself. People are not getting validation, support, love, and the therapy is the one place where they're getting unconditional positive regard. Right. That is value in itself. So in that case, I like to see two therapists at the same time. I mean, अच्छा है कि तीन चार बंदे मिल जाए unconditional regard दे रहे हैं. Two therapists is usually not good. आप stick to one. ठीक है. So what message would you give to the young people in Pakistan? It's okay to hurt, to struggle, to be depressed, to be anxious. That's normal. These are important emotions. Engage with them. Work your way through them. Don't resist them. Don't avoid them. Humans are designed to be anxious, are designed to be angry, are designed to be sad. Society, everybody will fail and have setbacks. तो इसमें बददिल होने की ज़रूरत नहीं है. ज़ाहिर है तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, ज़्यादातर लोग इनसे निकल जाते हैं. And so what's one thing that every Pakistani parent needs to hear? Listen to your children. आप अपनी बच्चों की बात सुने. अक्सर लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि कोई उनको सुन ले. तो मसला हल करने की ज़रूरत नहीं है. लोग समझते हैं कोई मुझसे कुछ पूछे फिर मुझे उसका मसला भी हल करना है, फिर आप हल बताते हैं, फिर वो बंदा सोच रहा है अब इससे तो कुछ नहीं होगा, मगर आप मुरव्वत में सुन रहे होते हैं. तो बेहतर है बंदा कुछ नहीं कहे, मगर किसी को ये तसल्ली हो कि मैं अपना दिल खोल के मैं आपसे बात करूं, आप बस सुन लेंगे और समझ लेंगे. And that is enough. और वो काफ़ी है. Thank you so much, sir. You've been very kind. Really appreciate your time. Thank you so much. Learned a lot from you. Thank you so much. Thank you so much.